Okay, so as we built the location, we did like a black and white. We kept it black and white. We said texture शुरू करने से पहले इतना complicated ये location है, तो let's do glossy क्या है, non-glossy क्या है, matte and glossy का एक basic, we made it's all monochrome only just to check what looks how and in a rough basic lighting. तो पोपट कहाँ पे आएगा, just the camera lens में वो कैसा दिखेगा, कौन से which part of the will be shown. तो इस तरह से we did some basic renders and जैसे ये यहाँ पे glass रहता है इनका टेबल पे, यहाँ पे reflection पकड़ेगा, पीछे में कुछ like some of the old ads which are like very old and they look very beautiful. So तो ठीक है, वैसा भी एक कुछ डालेंगे हम लोग फ्रेम में, तो वो सब चीजें थी उसमें. पोपट आएगा तो कैसा लगेगा, how what is the lensing we should do, should we be like too close to the parrot and कितना distort हो रहा है background. So ये सब चीज then थोड़ा basic lights कुछ आया उसमें, colors आया, और then lots of things like when you see then you can comment more on it. So once you do something then जो भी कचरा है, like यहाँ पे बहुत है, paint a menu on the wall, ये जो जगह पे है यहाँ पे कुछ मेनू कार्ड होना चाहिए, walls are looking very empty right now. Then reduce the bump on the wall, like this wall will be very bumpy. तो इस तरह के बहुत सारे like add and extra counter, ये सब खाली लग रहा है देखने के लिए. jar glass needs more transparency, ये सब एकदम इसके अंदर क्या है कुछ नहीं दिखाता है. तो इस तरह से बहुत सारी चीजें like brighten the metal on the bell, all these small like need reflections on the glass, make aluminium more glossy, like ये aluminium तो लग ही नहीं रहा है. तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, only once you see it then you see again a कच्चा render of what your final film would look like, because he is going to be there in front commenting. तो क्या दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है, तो ये सारी चीजें, ये जो कटोरी है इसका कैसा होना चाहिए टेक्सचर, like distort the top ring, add some more, like reduce, इतना scratches नहीं चाहिए, यहाँ पे थोड़ी scratch करेगा वो. तो ऐसा बहुत सारा छोटा चीज ना. Let's see the shady texture, मतलब वो उसमें वो कैसा रहेगा. Then smoothen the eyeball का mesh, then add black ring for the eye. So when we are seeing it at this stage, we felt like adding more stuff, like add stain patches on the wood, like यहाँ potty किया है या कुछ जो भी होगा ना उसका कुछ patches सब होगा. At that stage it was like this, so add the talent texture. So that's when you saw in the pre-production that we done some. So we downloaded a lot of things and उसको देख के accordingly इसको इस तरह से बनाया. फिर वो लाल कुछ गंदा लग रहा था टेलीफोन, तो उसको टोन डाउन किया. फिर इस तरह से then it kept developing in this way. ये मस्त ऐसा लग रहा है फ्राइडे के लिए छोड़ के डाला हुआ छोटा सा. तो इस तरह से बहुत सारी चीजें उसमें on the background front also it kept happening. Then on the, I would say like in the film, okay, the script to begin with was very interesting. The voiceover carries the whole film, the acting and the attitude in the film. The next best thing I really like is the animation. The Ajit Ahir is the main, he's the main animator, and he's interpreted that that animation so beautifully. And it's not interpreting, he has created from scratch most of the stuff. Okay, it's not like Bowman actually didn't do all these things. Like when he was reading, I'll show you the video recordings also. He maybe the facial expressions and all were there as he's reading. So he's got a paper in his hand. Sometimes he doesn't have paper, but he was not so animated when he was doing it. But this Ajit figured out such beautiful ways and translated that performance, which I find it very, very rare in animators today. To capture these sensitive little details. That's what makes your character so convincing. So I was so thrilled, that even we went about it in a very step-by-step process. Like he used to do a basic blocking, which were like just the main keys put against the audio track, and we used to see it like a play blast. So we know that okay, all the main stress points, everything is correct, and this kind of an action suits that particular dialogue, or do we need more aggression or less aggression? All these basic things you can react to it. So in a day or 1.5 days, he would do a basic blocking. इस तरह से वो हो रहा है, so we can react to it. If it's going in the right direction, then we would say अच्छा मस्त, इसको अभी आप fine tune करो. Then पूंछ का भी animation आ गया, इसका follow through आ गया, and expressions आ गए, lip sync आ गए. So all the blend shapes that you saw, the different mouth positions and all were being made in 3D. So all the body language happened first. इसका on the production front is evolution basically.
ये हुआ, अलग अलग टेक्सचर्स ट्राई किया, कच्चा रेंडर डाल के, मतलब पहले ही हम लोगों ने देखा कि कैसा लगेगा ये, बिकॉज बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर. तो विल इट लुक टू ब्लैंक और यू नो हाउ गुड और बैड इट लुक. फिर थोड़ा थोड़ा सा टेक्सचर्स आया उस पर, देन इस तरह से रेंडर एंड उसका हाथ और बहुत बड़ा क्लमजी गंदा लग रहा था. तो इस तरह से मतलब certain render tests that we did, there are certain things as soon as it comes to life, आप scribble में देख रहे हो तो एक you learn something about the character. Suddenly when he gets more details, it looks different to you. So when you see this, then again there are certain things that you don't like about it. You say okay, then you can comment on it. So you keep going one step further. तो इस तरह से ये वो केज वाला जब पीरियड था तब we built everything. So when the captivity issue came, he said, "चलो ठीक है, forget it. There's no cage. He just sits on a perch. उसका perch है, वहाँ पे maybe is a pet parrot. वो बहुत साल से रहता है, तो वो भी बॉस जैसे ही हो, तो वो भी जरूर है छोटा सांप का, वो सब जो भी बोलता है, ये सब चीज हो. He is also quite commanding position वाला parrot है. तो इस तरह से इसके हाँ, then there was some जैसे ऐसे टेक्सचर्स होते गए, it was not looking right, so some more comments कि ये जगह का टेक्सचर ऐसे करो, ऐसे मत करो. Then हाँ, ये सब again on the texture. So then we saw him from couple of different angles. अच्छा, ये सब हुआ फिर कि then again one more thing कि यार अच्छा ये ग्रीन और रेडी रखना है, कुछ और पैरेट हो सकता है, तो ऐसा अतरंगी पैरेट, ऐसा पैरेट, मतलब ये सब फालतू का जो भी कॉम्बिनेशंस है ये सब. देन वी फेल्ट दैट ये जो हाथ है ये बहुत क्लमजी लग रहा था हमको, तो हमने हाथ को छोटा किया, विच वी थॉट वाज ओके, इट विल बी नाइस. इतना बड़ा हाथ नहीं चाहिए वो एयरक्राफ्ट जैसे पूरा लग रहा है देखने के लिए. तो एंड हाँ, इन वन ऑफ आवर रिकॉर्डिंग्स impromptu, there was a dialogue which was there that पता है मेरे को, मैं बहुत टाइम से मेरे को मालूम है, मैंने बाल ऐसे धूप में सफेद नहीं किए, ऐसा था वो बोल रहा था उसमें. तो इधर ये सफेद नहीं रखेंगे, उसको पर्पल मतलब कुछ और पीला ऐसा कुछ करेंगे, बिकॉज उसका बाल कुछ हम लोग ऐसा करेंगे. तो अच्छा, तो मैंने धूप में पर्पल नहीं किए, ऐसा सब. द थर्ड फिल्म हैड ऑल दीज डायलॉग. देन वी चेंज दैट, वी in the final film those things are not there, but then keeping that in mind we tried all the purple बाल वाले options. फिर एक बनियन वाला ऑप्शन था. ये सब ऐसे ही था. ये सब हम लोग ऐसे मस्ती के जब पागल हो रहे थे ना हम लोग कि क्या करने हैं यार अभी, तो ये सब मतलब गलत सब चीज में घुस रहे थे. देन दिस वाज द लॉन्ग हैंडेड गाय. देन इसके बाद वो इस तरह से छोटा हुआ, तो हाथ को हमने काफी छोटा किया. तो ये सब जो है आपका 2D लेवल पे हो रहा है. ये जो छोटा मोटा किया है सब फोटोशॉप में पकड़ के छोटा मोटा करके, वंस यू सी दैट ओके ये बंदा ठीक लग रहा है, देन बी ऑन द प्रोडक्शन यू कैन मेक ऑल दोस चेंजेस. फिर और ये सब बहुत सारा लाइक डिफरेंट टेस्ट्स, लाइक ओके वी थॉट लेट्स गिव हिम अ ब्लैक रिंग सो दैट हिज आई आल्सो स्टैंड्स आउट, एक्सप्रेशंस कम आउट मोर स्ट्रांग. तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें वी व्हाटएवर वी फेल्ट विल वर्क हमने उसमें डाला है.